Hello friends, सत श्री अकाल. Welcome to Learn Maths online YouTube channel. So in this lecture, this is the second lecture of permutations and combinations, and in this exercise, in this lecture, we will discuss exercise number 7.2. So before doing exercise 7.2, we will discuss little bit about the permutations. What are the permutations? So first of all, definition. A permutation is an arrangement in a definite order of a number of objects taken some or all at a time. Basically permutations are just arrangements. So कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको. ये आप लोग ये कंसेप्ट से अवेयर हैं. जस्ट एक बार रिमाइंड करवाना है कि जैसे सपोज आपके पास ए बी सी तीन अल्फ़ाबेट्स हैं, इनकी अरेंजमेंट्स एक बार मैं तीनों को लेके अरेंजमेंट्स आपसे शेयर करता हूं, और दूसरी बार तीन में से हम एट अ टाइम 2 लेंगे जैसे ये डेफिनेशन में बताया गया है. तीनों अगर लेते हैं तो कौन सी पॉसिबल अरेंजमेंट्स बनती हैं? ए बी सी, ए को फिक्स कर दिया, बी सी, फिर सी बी. ऑर्डर मैटर कर रहा है, यहाँ पर परमुटेशंस में ऑर्डर मैटर करता है. इसी तरीके से फिर बी को फिक्स कर दिया है, ए सी बी सी ए. देन सी को फिक्स कर दिया, ए बी सी बी ए. तो ये हमारे पास जो टोटल हमारे पास अरेंजमेंट्स बनी है 1 2 3 4 5 6. इसी तरीके से अगर हम लोग ए बी सी में से एट अ टाइम 2 लेते हैं तो क्या कितनी पॉसिबल अरेंजमेंट्स बनती? ए बी बी सी, यहाँ बी ए भी आएगा साथ में, सी बी भी आएगा. देन ए बी बी सी, ए सी सी ए. ये पॉसिबल अरेंजमेंट्स बनती हैं 2 एट अ टाइम, और 6 पॉसिबल अरेंजमेंट्स यहाँ भी बन रही हैं. तो जस्ट हमने परमुटेशंस के थ्रू अरेंजमेंट्स कैलकुलेट करनी है. और इससे पहले जब तक हमें परमुटेशंस के कंसेप्ट का नहीं पता था तो हम क्या करते थे, अगर कुछ अरेंजमेंट्स हमने कैलकुलेट करनी थी तो हमें उनको पहले लिखना पड़ता था, फिर कैलकुलेट करते थे. लेकिन अब नाउ वी कैन फाइंड द नंबर ऑफ पॉसिबल अरेंजमेंट्स विदाउट लिस्टिंग देम. ओके, सो नेक्स्ट मेन कंसेप्ट इज द फैक्टोरियल नोटेशन. फैक्टोरियल वेरी इंपॉर्टेंट and very interesting and moreover very easy. Factorial notation. Factorial notation इसको कैसे डिनोट किया जाता है? The notation ऐसे लिखा जाता है, n साइन ऑफ एक्सप्लेनेशन, जहाँ ऐसे भी लिखा जाता है. ये लिखने का तरीका है. इसको रीड करते हैं n फैक्टोरियल. क्या है बेसिकली? ये रिप्रेजेंट्स, इट रिप्रेजेंट्स द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स. एग्जाम्पल दे के बताता हूँ और क्लियर हो जाएगा. लाइक फैक्टोरियल ऑफ 5 विल बी इक्वल टू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1. 5 फैक्टोरियल इज जस्ट प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 5 natural numbers. Then 7 factorial will be equal to 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2. And moreover 7 factorial can be written as 7 into 6 factorial. This is the value of 6 factorial. So n factorial will be equal to n into n minus 1 into n minus 2 up to so on 3 2 1. So it also can be written as n into n minus 1 factorial, or further you can write n into n minus 1 into n minus 2 factorial. So this is called factorial notation. Now we will solve exercise 7.2.
All the questions are very simple, and within moments we can solve this exercise, and you are going to be feel very comfortable. Yes, question number 1, evaluate 8 factorial. So what will be 8 factorial? 8 into 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1. It will be equal to 40,320. Very simple. Question number, it was the first part of first question. Now second part of first question is 4 factorial minus 3 factorial. इस यहाँ पर स्टूडेंट मिस्टेक कर सकता है, इज इक्वल टू 1 factorial लिख सकता है, नहीं, हमने सिंप्लीफाई करना है 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 2 इंटू 1, 24 minus 6, it will be equal to 18. 18 is the answer, second part. So in this way, now we will solve question number 2. Question number 2 is 3 factorial plus 4 factorial is equal to 7 factorial. Very interesting. So we will solve left hand side as well as right hand side. Left hand side will be 3 factorial plus 4 factorial. 3 into 2 into 1 plus 4 into 3 into 2 into 1. So 6 plus 24. It will be 30. So right hand side 7 into 6 into 5, 7 factorial. 7 factorial will be equal to 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1. It will be equal to 5040, and clearly we can conclude that left hand side is not equal to right hand side, and answer of this question will be no. 3 factorial plus 4 factorial is not equal to 7 factorial. Now come to next question, question number 3. In question number 3 we are to compute 8 factorial over 6 factorial into 2 factorial. So 8 into 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 over 6 factorial can be written as 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 into 2 into 1. So after the cancellation, this part will be cancelled with this. 2 4s are 8 and 7 4s are 28. Yes. So next question, question number 4th. If 1 over 6 factorial plus 1 over 7 factorial is equal to x over 8 factorial, then find x. Very simple question. 1 over 6 factorial. So dear friends, 7 factorial can be written as 7 into 6 factorial, and also x over 8 factorial can be written as 8 into 7 into 6 factorial. So in this way we can take common 6 factorial from both the sides. 1 plus 1 over 7 1 over 6 factorial x over
56, सो ये कैंसिल हो जाएगा. आफ्टर द कैंसिलेशन 8/7 is equal to x over 56. So easily we can solve further. 8/7 into 56. So x will be equal to 64. Final answer is 64. So next question is question number 5. Question number 5. Evaluate n factorial over n minus r factorial when n is equal to 6, r is equal to 2. In first part, just put n is equal to 6 factorial, n is equal to 6, 6 minus 2 factorial. So 6 factorial can be written as 6 into 5 into 4 factorial over 6 minus 2, 4 factorial. These two will be cancelled out and the answer will be 30. In first part, answer is 30. In the second part, when n is 9 and r is equal to 5, 9 factorial over 9 minus 5, 4 factorial. 9 factorial can be written as 9 into 8 into 7 into 6 into 5 into 4 factorial into, no need to expand further. So in the denominator we have also 4 factorial and these two will be cancelled out, and after the multiplication answer will be 15,120. So it will be the answer, and we have completed the exercise number 7.2. I hope you all will be going to enjoy this concept of permutations and combinations. So in the next lecture we will discuss exercise 7.3. Thank you friends.